साथ होगी। नमस्कार, आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इश्यूज विद द मैनेजिंग कमिटी। मैं चंद पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। सर झुकाने की खूबसूरती क्या कमाल करती है, जमीन पे सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल होती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों का अटूट ताकत होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना देती है। और इसी के साथ मैं मोहम्मद अफजल और चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित इसरानी जी आप लोगों का स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी में दो पक्ष होते हैं, एक आपकी मैनेजिंग कमेटी होती है और दूसरा होता है आपके मेंबर्स होते हैं। तो जो लोग मैनेजिंग कमेटी में होते हैं वो हमारी और आपकी तरह मेंबर ही होते हैं और उनका दायित्व ये होता है कि द मैनेजिंग कमेटी इज इन प्लेस टू ओवरसी द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। मैनेजिंग कमेटी एक ट्रस्टी होती है और उससे कुछ ज्यादा नहीं। दे नीड टू एडुकेट देमसेल्फ। अक्सर ये होता है कि मैनेजिंग कमेटी में ये ऑब्जर्वेशन पाया गया है कि 99% जो मैनेजिंग कमेटी में आते हैं उनको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट बोलिए, रूल्स बोलिए या बायलॉज बोलिए, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उनका काम यही होता है टू फैसिलिटेट स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी अफेयर्स इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। द मैनेजिंग कमिटी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उनका जैसे कि दायित्व है कि डे टू डे अफेयर को रन करना, सोसाइटी को स्मूथली रन करना। दे आर नॉट द बॉस ऑफ द सोसाइटी। तो उनको बहुत अच्छे से लोगों के समस्याओं को समझने के पश्चात उसका जो भी एक्शन है, निर्णय है, उनको उनका समाधान देने की आवश्यकता है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की, तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि ये जबान जो है वो घोड़े पे भी बिठाती है और गधे पे भी बिठाती है। तो अगर कोई भी मेंबर को कोई भी समस्या हो तो वो मैनेजिंग कमेटी के सामने लाने से पहले थोड़ा रिसर्च कर ले, थोड़ा एक्ट को देख लें, बायलॉज को देख लें और ये तय कर लें कि मैनेजिंग कमेटी के परव्यू में क्या चीज आ सकती है, पुलिस के परव्यू में क्या आ सकती है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के परव्यू में क्या आ सकता है, कोऑपरेटिव कोर्ट के परव्यू में क्या आ सकता है, एंड फाइनली आप ये समझ लीजिए अगर आप सही ढंग से अपने बॉडी लैंग्वेज को चेक में रखेंगे, अपने जबान को काबू में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ मैनेजिंग कमेटी दोनों हाथों से आपका स्वागत करेगी और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। रिमेंबर, जितने भी जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, अक्सर हमने ये पाया है कि एक गुट बन जाता है मैनेजिंग कमेटी का और दूसरा गुट बन जाता है मेंबर्स का। तो जब मेंबर्स अगर किसी भी मीटिंग में कोई भी इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना यूज करें। सेकेंडली, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए एंड आप जो इशू उठा रहे हैं वो मेरिट्स पे होना चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा ये देखें कि आप पोलाइट तरीके से आप उस इशू को मैनेजिंग कमेटी के सामने रखें। तो बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं डायलॉग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही ढंग से उसको पेश करें
एंड उसमें मेरिट्स हो। अब देयर आर वेरियस इश्यूज जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आए जाते हैं, कॉमन इश्यूज। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज बीएमसी के अंडर आती है, आप मैनेजिंग कमिटी के ऊपर चढ़ जाते हैं, आप उनको एक्यूजेशन करते हैं, आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सीमा तय करें कि ये जो पर्टिकुलर इशू जो आप उठाने वाले हैं वो मैनेजिंग कमिटी तय कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कि कोई और संस्था है जो इस चीज़ का समाधान आपको उपलब्ध करा सकती है। जैसे कि अगर हम लीकेज की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल जो कंप्लेंट्स लोगों के होते हैं कि भाई ऊपर वाले फ्लैट के बाथरूम में से लीकेज हो रहा है उनके फ्लैट में, तो जो भी इंटरनल लीकेजेस होते हैं वो आता है मेंबर टू मेंबर, और वो मैनेजिंग कमिटी के परव्यू में नहीं आता है। जितने भी आउटसाइड वॉल है और टेरेसेस हैं और डेड वॉल्स हैं, इनके द्वारा अगर कोई भी लीकेज होता है तो ये मैनेजिंग कमिटी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होता है कि आपको मैनेजिंग कमिटी को इन्फॉर्म करना है कि भाई इंटरनल फ्लैट से आपके लीकेज हो रहे हैं, उनके बाथरूम से, आपके बाथरूम में या आपके बेडरूम में, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैनेजिंग कमिटी उस कंसर्न मेंबर जहां से लीकेज हो रहा है उसको अप्रोच करें, उसको रिक्वेस्ट करें कि वो अपने जो भी लीकेजेस हैं उसको दुरुस्त कराएं। जो भी अमाउंट जो पे करना है, नॉर्मली देखा गया है कि 50-50 दोनों फ्लैट ओनर को बेयर करना पड़ता है। मैनेजिंग कमिटी की सीमा यहां तक है as long as internal leakages are concerned. As long as external leakages are concerned, that is from the dead wall, outside wall, terraces, ये मैनेजिंग कमिटी के द्वारा मैनेजिंग कमिटी के अंतर्गत आती है और इसका समाधान मैनेजिंग कमिटी को ही करना पड़ता है। अब अगर इंटरनल लीकेजेस के बारे में हम बात करें, अगर आपके ऊपर वाले फ्लैट वाला अगर आपके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बीएमसी के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, आपके लोकल वार्ड का, वहां पे आपको अप्रोच करना है, आपको वहां पे कंप्लेन फाइल करनी है, और कंप्लेन फाइल करने के पश्चात बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से नोटिस इशू होगा टू द कंसर्न मेंबर जहां से लीकेज है, और अ कॉपी एड्रेस टू द सोसाइटी। तो वहां पर ऐसे डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि सोसाइटी वो कंसर्न मेंबर जहां से लीकेज हो रहा है उसको अप्रोच करें, अप्रोच करने के पश्चात उसको रिक्वेस्ट करें कि आप उस लीकेज को दुरुस्त करें। अगर वो दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है तो मैनेजिंग कमेटी के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो ज़बरदस्ती वहाँ पर वो रिपेयर करवाए, और रिपेयर करवाने के पश्चात उसका जो भी अमाउंट होगा रिपेयर का वो कंसर्न मेंबर के मेंटेनेंस बिल के अंदर ऐड करके दे दें। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल लीकेजेस के लिए आपको क्या करना है। मैनेजिंग कमिटी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ इट. You have to approach the building and factory of the BMC local ward, वहां पे आपको समाधान होगा। सेकेंडली, एक्सटर्नल वॉल का है, टेरेसेस का है, तो मैनेजिंग कमिटी का रोल होता है और वो ही इस चीज का समाधान कर सकते हैं। और अगर मैनेजिंग कमिटी नहीं करती है तो फिर आप अगेन बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को आप कंप्लेन एड्रेस कर सकते हैं और वहां से आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो कॉमन है हर सोसाइटी में वो है इंक्रोचमेंट। एज पर लॉ, एज पर बीएमसी लॉ, कोई भी कॉमन पैसेजेस हैं, ओपन एरिया है, कॉमन टेरेस हैं, वहां पर कोई भी मेंबर किसी किस्म का फ्लावर पॉट नहीं लगा सकता है, ग्रिल नहीं लगा सकता है। ये सारे चीजें इंक्रोचमेंट के अंदर आती हैं और
सोसाइटी यहाँ पे इंटरवीन कर सकती है। इंटरवीन करने के पश्चात वो कंसर्न मेंबर को नोटिस इशू कर सकती है और उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो आप कॉमन पैसेज से और कॉमन एरियाज से जो भी इंक्रोचमेंट है वो हटा दें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं देन बीएमसी बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट कैन बी अप्रोच। इलीगल एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी जो अप्रूव प्लान है उसके आगे जाते हुए कोई भी मेंबर कोई भी ऑल्टरेशन एडिशन या नहीं करवा सकता है। ही कैन नॉट टच द कॉलम्स एंड बीम्स, ही कैन नॉट मेक एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। और यदि अगर वो ये करता है तो मैनेजिंग कमिटी भी इंटरवीन कर सकती है आपको। और अगर आप फिर भी उस चीज को दुरुस्त नहीं करते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते हैं, रिस्टोर नहीं करते हैं, तो वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को अप्रोच कर सकती है और वहां से समाधान ढूंढ सकती है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी मेंबर रिस्टोर नहीं करता है कोई भी इलीगैलिटी को, तो बीएमसी एक्शन लेती है, नोटिस इशू करती है, नोटिस ऑफ रेस्टोरेशन। और अगर तब भी नहीं करती है मेंबर, उसके पश्चात वो एमआरटीपी एक्ट के तहत बीएमसी के कोर्ट में वो केस दायर करती है अगेंस्ट दैट कंसर्न मेंबर। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि कोई भी इश्यूज को लेके आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है, वेदर इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, whether deputy register, whether there is nuisance as far as illegal activities are concerned in the society, like drugs का issue हो, immoral act का issue हो, prostitution का issue हो, या alcoholism का issue हो, ये सारे चीजें वो पुलिस के पास आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो आपको हर मेंबर को कोई भी कंप्लेन उठाने से पहले थोड़ा आगे पीछे रिसर्च करने की जरूरत है। आज इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, इट इज वेरी इजी। आप गूगल करिए, आप गूगल करने के पश्चात आपको हर चीज का समाधान मिलेगा और उस गाइडलाइंस को लेते हुए यू कैन अप्रोच द वेरियस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और whichever is coming under the managing committee, आप उनको अप्रोच करके आपके सारे इश्यूजों का समाधान कर सकते हैं। आज के तारीख में अक्सर हमने देखा है कि सोसाइटी में लोग डॉग लवर्स हैं, कैट लवर्स हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादातर डॉग लवर्स के साथ में आती है जो वो डॉग्स को नीचे ले जाते हैं वो बच्चे को पू कराने के लिए, और एज पर द एनिमल वेलफेयर बोर्ड के हिसाब से नोबडी कैन स्टॉप द पैसेज ऑफ द डॉग्स। मगर उनका काम यही है कि जो डॉग ओनर्स हैं वो साफ सफाई देखें, वो जो भी अगर वो डॉग पू करता है तो उसको उठाएं और लोगों को किसी किस्म का अनईजीनेस नहीं, अनकंफर्टेबलनेस नहीं करवाएं, उनको फील करवाएं। और देन दैट डॉग्स कैन नॉट बी डिसअलाउड इन एनी सोसाइटी। जहां तक बीएमसी का सवाल है वहां पे उनका स्पेशली डॉग स्क्वाड होता है और वहां डॉग स्क्वाड का जो काम है, उनका दायित्व ये है कि जिस जगह से वो डॉग को पिकअप करते हैं वो पिकअप करें, उसको स्टेरलाइज करें, स्टेरलाइज करने के बाद वो उसी स्पॉट पे डॉग को छोड़ दें। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के तरफ से फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं और ये मेंबर्स का दायित्व बन जाता है कि उस सर्कुलर को फॉलो करें और भले ही वो डॉग रखते हो मगर वो ये तय करें कि आपके नेबर्स को या आपके किसी भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को किसी किस्म का न्यूसेंस ना हो और उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये हर मेंबर का ये दायित्व होता है कि आप रूल्स को फॉलो करें
और किसी को दूसरों को परेशान ना करें। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो लोग अपर फ्लोर्स में रहते हैं तो वहाँ से वो कूड़ा फेंकते हैं, और वो कूड़ा फेंकते हैं, वो बच्चों के डाइपर्स फेंकते हैं, नैपीज फेंकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो सारी चीज़ें फेंकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है मेंबर्स को कि टू इनकलकेट सिविक सेंस। आपके पास ड्राई सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज है, ड्राई का भी है, वेट का भी है। आप जो भी चीज़ आप मतलब निकालते हैं उसको आप सेग्रीगेट करें, और ये हर मेंबर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि थोड़ा, बीइंग एन एडुकेटेड क्लास ऑफ पीपल, हमने ये पाया है कि दे आर द वंस हु मेक द मोस्ट न्यूसेंस। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको सिविक सेंस इनकलकेट करना चाहिए ताकि उनके नेबर्स को या उनके जो नीचे रहने वाले जो अदर फ्लैट मेंबर्स है उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये चीज़ें जो हैं ये आप मैनेजिंग कमेटी के पास लेके जाएंगे तो ये क्या मैनेजिंग कमेटी क्या कर सकती है। तो एवरी इंडिविजुअल फ्लैट मेंबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए और सही ढंग से को मेंबर की तरह को मेंबर्स जो हैं उनके साथ में मिलजुल के कैसे रहा जाए ये उनको खुद को तय करना पड़ेगा। अक्सर देखते हैं कि वाटर टैंकर्स कई सोसाइटीज़ में बीच में पानी रुक जाता है, पानी नहीं आता है, फ्लश में पानी नहीं आता, या अगर फ्लश में पानी आता है तो एसटीपी प्लांट सही ढंग से काम नहीं करता है और एकदम गंदा पानी आता है फ्लश में और बदबूदार पानी आता है। और इसके बीच में कई बार बीएमसी सर्कुलर निकालती है कि भाई सर्टेन टाइमिंग्स में पानी वो बंद करेंगे ड्यू टू रिपेयर्स ऑफ मेजर पाइपलाइंस हो, या ये सारे सर्कुलर्स वो प्रोपेगेट करती है, सर्कुलेट करती है। मगर हमने अक्सर देखा है ये करने के पश्चात तब भी ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो मैनेजिंग कमेटी को दोषी ठहराते हैं। तो जब मेन बीएमसी के तरफ से पानी नहीं आएगा तो मैनेजिंग कमेटी क्या कर सकती है? उनका फॉल्ट नहीं है। हाँ, वो ये काम कर सकती है कि वो टैंकर्स को सही टाइम पे वो ऑर्डर कर सकती हैं ताकि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। तो आपको ये समझना है कि पानी नहीं आ रहा है तो आप मैनेजिंग कमेटी के ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। आपको ये समझना है कि भाई बीएमसी के तरफ से पानी बंद किया गया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स of your issues, you have to do research, you have to understand कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कंप्लेन का समाधान हो सकता है, और इसको समझदारी के तहत पोलाइट तरीके से बट बेस्ड ऑन मेरिट्स जो मैनेजिंग कमेटी के अंतर्गत आता है आप उनको पोलाइटली पुटअप करिए, सिविलाइज तरीके से पुटअप करिए ताकि आपको कॉपरेशन मिले मैनेजिंग कमेटी की तरफ से और आपके इशू का समाधान हो। लिफ्ट आज पूरे बॉम्बे में आप देखेंगे, पूरे बॉम्बे में अगर हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो 3032 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है मुंबई में। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देयर आर 32,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। और अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो देयर आर 92,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। और हमने अक्सर पाया गया है कि बिकॉज ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन द मैनेजिंग कमेटी एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ये विवाद अननेसेसरली एस्केलेट होता है। तो एक तो मेंबर्स की तरफ से उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दे हैव टू बी एक्सट्रीमली पोलाइट,
they have to check their body language, and the issue should be on merits. So there is no reason why the managing committee will not cooperate with you और आपका समाधान नहीं हो. मैं अपने टॉक्स में हमेशा कहता हूं, अक्सर आप देखेंगे कि आपको कोई काम कराना है तो दो ही तरीके हैं. एक तो आप ठुड्डी में हाथ प्यार से रख के आप अपना काम करवा सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप थप्पड़ मार के काम कर सकते हैं. तो अगर आप अपने आप को मैनेजिंग कमेटी के कुर्सी पे अगर आप रखें, उनके जगह में आप रखें, यू पुट योर फुट इन देयर शूज, तो आप कौन सा चूज करेंगे? डेफिनेटली जो सामने वाले का अप्रोच है, अगर वो पोलाइट है, उसके केस में मेरिट है, तो नो मैनेजिंग कमिटी विल डिसअलाउ दैट इशू टू बी टेकन और आपके इशू का समाधान करने के लिए. सेकेंड चीज, ये आपको समझने की जरूरत है कि ये जो ग्लास है ये आधा पानी से भरा हुआ है. अब पानी से भरा हुआ है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका व्यू पॉइंट कैसा है. मैं कहूंगा एक समझदार नागरिक की तरफ से या एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरफ से कि भैया ये ग्लास आधा फुल है, और जो समझदारी नहीं अपनाते हैं तो वो कहेंगे कि ये ग्लास आधा हाफ खाली है. और अगर आप हाफ खाली बोलेंगे तो संवाद बढ़ेगा और आपका समाधान नहीं होगा. यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, यू नीड टू अप्रिशिएट द मैनेजिंग कमिटी, एंड एट द सेम टाइम मैनेजिंग कमिटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेंबर को इशू है इसीलिए वो आपको अप्रोच कर रहा है, और यू हैव टू बी टोटली ट्रांसपेरेंट. अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स उनको मुहैया कराएं और उनको उनके इश्यूज का समाधान करें. तो इसी के साथ में आई वुड like to pass on the mic to Amit Israni ji and request him to take it forward from here. Good evening. We have got insight into how the managing committee or members have to react with each other. Most of the times it happens the right way, but there are some basic principles which we have to understand. The first principle is that we are in a cooperative society, and cooperative society runs on the basis of cooperation. And cooperation has to be within the entire system. It is the managing committee or the members. They are all in principle initially members of the society. And when all the members are available, the society has to be managed with ease and comfort by all of them. But as all cannot be on the driving seat, the members appoint a few people from among themselves who are delegated certain responsibilities or authorities or powers or duties or functionalities. And after that is done, they again look at it and say, look, we have appointed some people or delegated some people, but still we need their work to be cross-checked. And then they have the issue of appointing an auditor, whose job is to look at the accounts and to look at the working of the managing committee, how they are functioning, and give a report to the members who have appointed the auditors and tell them that the books of accounts which are prepared by the managing committee at the year end are in order with the books of accounts that have been prepared by the society managing committee. And also they have to report on the working of the managing committee. So while the auditors are doing their job, they also have to investigate and verify that all the rules are followed, compliances are there. And in the course of compliances, if they find deficit or deficiency, it has to be reported to the member. There's a procedure laid down under various sections of the Cooperative Society Act. The timing that we have now is a bit tight, so I'll go very fast into the major aspects and will not go deep into each specific item, which we will do later on as we go along the series every Saturday.
and we'll be doing in-depth dive for most of the items. Cooperation comes from United Nations. It is not peculiar to India. And from United Nations, we have the 7 principles of cooperation. First of all our members in a society, before they buy a flat, should appraise themselves of what these cooperative principles are. There are 7 principles. And if you Google it, you will find the 7 principles. And if everybody adheres to it, and the 7 principles are typed out, printed out, and pasted in the society office, then all the members will realize up to what level they have to go and what level they don't have to go. The way everything is functioning in India or in Bombay, Maharashtra, we have 4 sets of guidelines or guidebooks, if I may call it. This is the Cooperative Society Act. Second is the rules attached to the Act. Third are the bylaws. And fourth are the government regulations or government directions or registrar's directions, which are given from time to time per the law. It is very, very important that all members read the bylaw, because bylaw basically is a working arrangement within the society and is binding on the members of the society and the residents of the society. Rules and acts apply in the relationship of the society versus third party or outsiders. So in the bylaws, it is divided into 174 sections, clauses, and each clause tells you what you can do, what you cannot do, how you do it. And if you follow the procedure, things become very, very simple. And every member, whether he is in the managing committee or not in the managing committee, has to essentially ensure that we follow the rules, follow the principle, and we don't get stuck into a situation of conflict. Conflicts basically come because there is lack of understanding that every person living in a building, which is a cooperative society, has equal duties to perform. Cooperative society housing is not a hotel where 7 people will work as a managing committee and the rest will demand that things are not being done or being done. We have situations where demand is there, and members who are not in the managing committee feel that there are 7 people who are always supposed to be at their attendance. So that is a mistaken demand which leads to conflict, because it is principally holding hands. Many points have already been covered, and I'll just take my viewers who are watching us into a series of few points which are common problems which happen between managing committee and the society. From the managing committee and the members' point of view, there are issues of inefficient management. There are issues of unity and cohesion. There are situations where, because we are a small society, issues are different, and a large society with more members, issues are different. We have motivation issues. If we have a wall between the committee and the members, then we have a huge motivation issues. And then there are issues of decision making, delayed in decision making, implementation of the decision, government interference when there is non-performance, and lack of confidence among each other, which can come either out of ignorance or out of lack of public confidence. If we don't know the laws, or we don't need to know the laws, then we have a situation where 2 people ignorant of the laws will start to implement their thought process. Ye aisa hona chahiye tha, aisa hona chahiye hai. And if you know the jurisdiction, the laws and the bylaws are very, very clear on what the jurisdiction are and what we have to expect. Normally we see problems of leakage issue, which has already been dealt with in depth. Then we have membership issues, we have parking issues, we have NOC issues, we have obtaining document issues, we have neighborhood relationship issues, we have service and amenities issues, default of amenities issues, voting, elections, redevelopment issues. Now, each of these issues I will be touching in very briefly so that we can accommodate within the time. The leakage issue has been dealt with. Membership issue is when you are either buying a flat or you are setting up a society
And then you are getting into a society relationship or a cooperative society relationship with each other. There, once the builder has set up the whole place, the society is registered and everybody becomes members with their rights, duties, responsibilities, obligations already listed in the bylaw to which we are subscribed. Thereafter, we have buying and selling of flats. The procedures are also listed down. Forms have to be filled, fees have to be paid, agreements have to be correct. Buying and selling could also involve gifts or family settlements or any other form of arrangement that members may want to have within themselves during their lifetime. They are allowed to do that. So you can do that by following the due process of law. We have now other issues of people wanting documents, either for getting a passport or not getting some documents. And the procedure also is very, very clear that certain documents are allowed and certain documents are not allowed. And they're all listed in a chapter which is specially created for housing, which is 154B, which started in 2019. And all the viewers are requested to go through the 154B. It's a very small chapter, and which will more or less answer all the queries that are there, read together with the bylaws and the GRs. Neighborhood issues do form problem when I have problem with my neighbors. These things are normally sorted out in societies when they have their annual get-together or they have meetings in the societies. Voice out your things, sit down in an amicable environment. And on amicable environment is actually the basic, because the idea of buying a house is to live peacefully, family as one family, and enjoy each other's company. The moment complaints start coming in, it actually distorts and destroys the entire cooperative spirit. So that somehow we all have to understand that if we have to live in a place, we have to give a little, take a little, bend a little, and over a period of time, blend a little. And then you have your happy and satisfying stay in the building you are living. Cooperation between the managing committee people or members who are part of us and delegated a job also have to realize that their duty or their function. And here I want to bring it to the notice of my viewers. In the bylaws, there are no powers given to the members of the managing committee. It's a joint power given to the committee. If a committee takes a decision, that is a joint power. So far as the secretary is concerned, there are functions of the secretary which are defined. So by going under the understanding that the secretary or the office bearer has certain inherent powers is not a correct definition, because there are definition and duties to be performed which are all listed down in the bylaws. Treasurer has a function to make sure that the money management is done properly. Money is not lying idle. Budgets are prepared. Expenses are incurred in line with the budget. And the books of accounts together with the secretary and the auditors are made up in such a way that the reports that are to be given to the managing committee to the general body is done in a seamless manner. There are also penalties that come up if you don't perform or committee doesn't perform. And even if members do things which are not correct for not performing or not complying with the rules and regulations, there are penalties also. And there's a process of how penalty can be charged. Penalties have to be charged by giving show cause. The member to whom it is given has to give an explanation. It has to come before the general body where it is discussed, and then the penalty starts. There are many societies which we see, they do ad hoc charging because the word penalty exists in the bylaw. There is a process. Without the process, if a charge is made, it would not be legally tenable. Then we have issues of amenities. There are a lot of amenities which society provides, or the committee is supposed to ensure that the services of amenities are implemented. And there are disputes that come up. And there are a couple of problems that are seen where defaulter issues come in. And the committee says if you're a defaulter, then you cannot use the amenities. If you're a defaulter, you can't attend general body meeting. If you're a defaulter, you cannot vote. You cannot stand for elections. These are all confused statements because the law does not discriminate defaulter and non-defaulter where it comes to amenities or facilities. Every member has equal rights because it's paying for it, or is supposed to pay for it, or it can be recovered from him either way.
So committee cannot stop somebody who is a defaulter from attending general body or voting. Of course, the person who is a defaulter cannot stand for elections. But there is nothing in law which can stop him from attending general body or discussing in general body, voicing out why he is not paid, so that they can come to a conclusion. Then we have got redevelopment, which is the current issue on which a couple of videos have already been made, and it can be referred to in the YouTube. And in general, there is a procedure that has to be followed, and we have to follow Section 979A, etc., where it has to be followed in spirit and words, and not only in words. And the entire redevelopment exercise under 79A is based on making sure that the 8 objectives of the redevelopment are followed and the procedures are followed. Not only the procedure, but including the reason and the objectives of the procedure which are given in the 79A. Questions have also arisen whether it is mandatory, not mandatory, whether it is a guideline. 79A is a section of the law which says that society has to follow, members of the managing committee shall be bound to follow the GRs that are issued. And one part of the section says that if it is not followed, then there is a hearing in the registrar's office and the committee can be debarred for 6 years for not following the procedure of 79A. So in short, it is somehow mandatory from the point of view of law. Question now arises is if we have managing committee and we have the members and this dispute is on, what are the grievance redressal issues that one has to face? The grievance redressal issues that one has to face is the mechanism that has been put in place by the commissioner in May 23. There is a circular that has been issued where he has detailed down the grievance settlement procedures, where the society has to create the first level of settlement of grievances. Then it goes to registrar, then to DDR, then to joint registrar, then to the commissioner. They're all listed down in the circular. And the circular is available on Google or through the registrar's office or on the site of the commissioner. And this can be downloaded. And it's a very clear signal there that the intention of the cooperative is, cooperative society is independent. They have to run their own show. They have to take their own decisions with their own funding. So if everything is our own, then the reason of going to registrar should be the last resort, not the first resort. Because the moment you bring an outsider or a regulator into your society issues, then we are also asking for interference in our working methods. So that becomes very, very important. And thereafter, we have the role of the auditors, who have to ensure that the books of accounts are certified, the accounts are prepared on time, auditors' reports are sent out on time, and auditors have been given certain assignments that they have to follow certain areas which have to be included in the audit report, like, for example, the investigation and overview on the overdues. So if there are overdues shown, the auditor has to make sure that he sits with the member and takes care of his function, which is a socio-economic financial audit. It is not a financial audit in cooperative society. So social, economic and financial audit is the basic requirement. And after the grievance procedure has followed, and we come to a solution, and when there is no choice and you are not able to meet the two sides on an issue which is maybe very personal or maybe affecting a group of people due to high-handedness of the society members or high-handedness of the committee members, then there are obviously litigation comes in. If there are membership issues which a person is entitled to become a member, there are deficiencies from the part of the managing committee in allowing them to exercise their fundamental rights, because society has now been classified as fundamental right under Article 19. And if there are disturbances, then obviously one has to go to court. But that would be the last resort, not the first resort, because the moment we talk about going to court or going to registrar, imbalance is created within the society.
and then walls are created, and you have multiple groups, and the whole functioning of society or the purpose of forming a cooperative society and the 7 principles which adhere us to make a cooperative society is defeated, totally defeated. We have got a lot of questions that are coming in, and some of the questions that have come in are very specific, and we have got some pertinent questions which I will look at and try and sort them out. The major questions that are coming are on leakages, which has already been discussed by Mr. Absal, but I'll delve a bit into that. It is the business of the society or the duty of the committee to ensure that the building is maintained and managed. If we look at the object clause of the society formation document in the bylaw, the first objective is to get conveyance for which the society is formed. Then there are other objects, and one of them is to manage the building. Third is to collect the money and create cultural activities and have a harmonious environment. These are the objectives. So managing committee has to work within the 4 or 5 objectives which apply to our society. Title and ownership is not the business of society, it is the business of courts. So if there are disputes in titles, or there are disputes on nominations, or there are disputes on disputes between people who are multiple claimants on a flat after death of an original member, then these are matters which court can decide, and whatever is the order, the society has to implement. But in case the dispute continues, then society has to ensure that there is a member. A flat cannot be left without a member. So for that, a law section has been created where it says that if somebody has a testamentary document, he has to become a member. Testamentary document means a document of arrangement whereby stamp duty is paid, it is registered. Like you have a probate or you have a sale agreement or things like that. Then we have a second where there's a nomination. If you have a nomination, society shall put the name of the nominee as a member, and they call it provisional. Provisional means for the time being. It does not reduce the rights of that member. So that person has all the rights of the original member or the deceased member, and is there only till such time that other legal heirs who may be claimant can come with an order from a court, and society has to follow the order of the court. The third category is if there is no testamentary document and there is no nomination, then in view of the fact that there has to be a member, the law says that whoever the committee feels is the legal representative, in the opinion of the committee, is the legal heir or legal representative, has to be made a member. So everywhere there has to be a member. You can't have a flat without a member, because there is another section 25 which says that on the death of a member, of a person who is a member, his membership ceases. He ceases to be a member, which means there is a vacuum. And 25A thereafter says that after death, committee has to remove the name from I register, J register, and if they fail to do so, registrar shall appoint an officer to go and correct it. Which means the contract of a society with the member has to be between 2 living bodies, that is the society and a person who is living. You can't have a contract with a dead person, except if it is with the state, who then have to the state has to then appoint somebody who will then become a member provisionally till the legal heir is decided by the courts. Now, the third question that are coming here are defaulters and amenities. Defaulter has to be declared a defaulter. Notice has to be issued. And there is a confusion among a lot of societies members where defaulters are shown year after year. The intention is to collect the money to manage society. If the defaulters are shown year after year, an attempt is not made to recover, then we have an issue of the wrong accounting, because the accounting would show receivables which are actually not receivables, and interest will be calculated, and those interests will then be shown as an income and would show in your balance sheet. So we'll give a view which is not true and fair. So auditors have a role to play there, to look at the outstanding, look at the overdues, sit down and try and resolve it,
And if it is not resolved and it is correct, then within the limitation period of 2 or 3 years, society has to go and make sure that they apply to registrar under the relevant section and collect the money. If you leave the money in the accounts and do not make attempt to collect it, and it passes the limitation period, then another set of problems are created for the managing committee for not performing their function of collecting the money, which is the object of the formation of the society. So these are the few things which are very, very important. The next thing that comes is there is a section in the law which says that if you are a defaulter, your membership cannot be transferred, or your membership cannot be, new person cannot be made a member till dues are cleared. But there are two exceptions in the new law that has come, that this particular law of exemption, not making a member, has two exceptions. One is if you are a nominee, then you cannot be stopped from becoming a member, even if there is an outstanding. And if you are a legal heir, not a nominee, but a legal heir, and you have brought your application, then application has to be taken, member has to be made, and then the process of collection has to start. But a membership of a person on death is to be stopped by managing committee is not as per law. It is violation of the law, because otherwise you are going to have a society with less number of members. Redevelopment has already been dealt with. And you have any questions that have come up? As far as defaulters are concerned, I would like to say that you cannot declare any member a defaulter unless the proper procedure has been followed. Precisely. And notices have been issued. Secondly, you cannot display the defaulters list on the notice board. It can amount to defamation against the managing committee. Correct. So it is very important that these finer points need to be understood by the managing committee and taken forward from there. So what you need to do is to put up the list with the flat numbers and not with the names. So put out the flat numbers which are having a default, that is okay. But the names of the person, because when you call somebody a defaulter, it has to be established defaulter. And many times we have situations that occur, our penalties are charged in the account, making a person a defaulter who technically is a defaulter, but in reality is not a defaulter. So it becomes slanderous and becomes a defamation exercise. Very true. So I think so. We at Citizen Justice Forum, हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को enlighten करें and to empower them to move forward in their endeavors. This is basically what we do is give you education and knowledge. We do not give legal advice. We are not here to take each individual cases, because we have got quite a few individual cases that have come in our chat, and we will refrain from taking, because for that the person has to seek legal advice from his own legal or society's legal personnel. And our attempt is to bring you knowledge, bring you guidance, so that you have the basic navigational approach to how you should go and get your problems resolved. I think so. Amit Asrani ji sir, thank you very much. No, thanks for and thanks all of you to attend this. And हम request करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग empower हो. Thank you so much. Thank you. Good night.